That's recall, everyone. I'm going to go ahead and get started. My goal of my presentation today is to talk about what the behavioral symptoms of autism are, and then I want to show you a case study about the science of applied behavior analysis that's used to treat this condition. ये एक साइंस है जिसके बारे में बात करेंगे और उसमें क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी. One of the main behavioral diagnostic criteria of autism is deficits in social communication. So this is a lack of eye contact, failure to respond to other people speaking to that person. It could present itself as one-sided conversations where the individual just talks and talks and talks about something he or she's interested in without any awareness of what the other person would like to say. So basically, can you go back? Sure. I will also have to read out. Basically क्या है कि ये सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कई बार बच्चा ऐसा है जैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहा है या और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम है, उसको आसपास के एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं. The second diagnostic criteria is you're going to see a lot of repetitive behaviors, repetitive motor movements. This could be watching the same movie clip over and over again, listening to the same song. Very common is in young children with autism, they line up toys in a very certain pattern. असिस्ट कर दूंगा in case आप लोग ये चाहेंगे तो. Lot of people will be able to understand, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको असिस्ट करूं. Dr. Perry, you will have to finish it within 20 minutes because our chief guest is supposed to go, and so we'll be moving little faster, huh? Yeah, please go ahead. That's recall, everyone. I'm going to go ahead and get started. My goal of my presentation today is to talk about what the behavioral symptoms of autism are, and then I want to show you a case study about the science of applied behavior analysis that's used to treat this condition. ये एक साइंस है जिसके बारे में बात करेंगे और उसमें क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी. One of the main behavioral diagnostic criteria of autism is deficits in social communication. So this is a lack of eye contact, failure to respond to other people speaking to that person. It could present itself as one-sided conversations where the individual just talks and talks and talks about something he or she's interested in without any awareness of what the other person would like to say. So basically, can you go back? Sure. I will also have to read out. Basically क्या है कि ये सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कई बार बच्चा ऐसा है जैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहा है या और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम है, उसको आसपास के एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं. The second diagnostic criteria is you're going to see a lot of repetitive behaviors, repetitive motor movements. This could be watching the same movie clip over and over again, listening to the same song. Very common is in young children with autism, they line up toys in a very certain pattern, and if you try to interrupt that pattern, they could go into tantrums or aggressive behavior. If you see on these two slides, this is one of my patients back in the United States. Prior to treatment, he would line up his toys in a very specific pattern. यहाँ पे जो स्लाइड्स में आपको दिखाया गया है, ये रेपिटेटिव बिहेवियर लिखा हुआ है, जिससे कि 3-4 सिम्टम्स दिखाए हुए हैं. तो किसी भी एक पेशेंट के अंदर वो 2 सिम्टम्स पाए जाने जरूरी हैं, और उसके अंदर फिर इन्होंने स्लाइड्स में दिखाया हुआ है, जो इनका एक यूएस का एक पेशेंट है, उसकी स्लाइड्स को दिखाई हुआ है कि कैसे वो काम करता है और कैसे उस स्लाइड्स को टॉयज को ले डाउन करना होता है. So that is what she'll be talking about. Please. This video clip you're going to see, this is a patient from the US. This is baseline data, meaning it was a video taken prior to any treatment. In the video, you're going to see him lining up his toys in the very specific pattern, and he's singing the same song over and over again. ये जो बच्चा अभी दिखाया हुआ है, ये ट्रीटमेंट के प्रायर वीडियो है, ट्रीटमेंट से पहले लिया गया वीडियो है. यहाँ पे आप वीडियो को देखेंगे कि कैसे वो टॉयज को ले डाउन कर रहा है और वो एक सॉन्ग को बार-बार जो है वो रिपीट कर रहा है.
And as you can see, if we would have tried to remove the zebra or the tiger, he would not have been happy. He would have tried to hit us. He would have probably gone into a meltdown. अगर यहाँ से किसी एक टॉय को हटा देंगे, जैसे शी इज सेइंग कि इसमें से ज़ेब्रा को अगर हटा देंगे तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा और उसका बिहेवियर जो है वो आपको मारने तक भी जा सकता है. Other repetitive behaviors that are associated with a diagnosis of autism is spinning in circles repeatedly, hand flapping. There's also an extreme inflexibility to any type of environmental change. This could be a substitute teacher for a day, or if a family takes a different route to school. Anything that's not the same can trigger tantrums, aggressive behavior, meltdowns, crying and screaming. तो कहीं पे भी उसके लिए कोई भी पैटर्न को चेंज किया जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे आपने यहाँ पे दिखाया है स्पिनिंग इन सर्कल्स रिपीटेडली, तो वही उसी के अंदर ही वो घूमना चाहता है. हैंड क्लैपिंग जैसे वो करता है बार बार, उसको स्कूल के अगर लेकर के आप जा रहे हैं और स्कूल का रूट भी आप चेंज कर लेते हैं तो भी उस बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है. और उसको वही खाना खाना अच्छा लगता है, उसको खाना भी आप चेंज करोगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है. Other diagnostic criteria, it's a hypo-focus on a particular toy. They're only interested in one thing. This is also something very important. Neurologically, they have atypical reactions to sensory input, different pain perceptions. Something that you or I might feel hurt, they might not even feel the pain. Difficulty with tolerating different food textures and difficulty tolerating loud noises, fire drills, being on a loud bus, any environment where there's a lot of auditory stimulation. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उस बच्चे के डायग्नोसिस को बनाने की बात कर रहे हैं कि उसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है. तो इसके अंदर जैसे उसका जो इंटरेस्ट रहता है बच्चे का, तो वो एक ही टॉय से खेलने के ऊपर रहेगा. उसको सारे टॉयज पसंद नहीं आएंगे. अगर आप 10 टॉय देंगे तो उसमें से वो हमेशा एक ही टॉय पिक करेगा, उसी के ऊपर उसका इंटरेस्ट रहेगा. उसके बाद उसका पेन परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है. जैसे किसी कंडीशन में अगर उसको हम हिट कर देते हैं, हमें हिट करेंगे तो शायद चोट लग सकती, लेकिन उसको शायद फीलिंग भी नहीं आएगी. या किसी दूसरी केस में अगर उसका खाना चेंज कर दिया जाएगा तो वो खाने से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है. तो डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस से भी उस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. ये पार्ट ऑफ डायग्नोसिस है जो वो बता रही हैं आपको. Symptoms must be present early in life between 12 and 36 months. In the United States, it's the way the country is kind of set up the treatment model for autism. If a child is not starting to say, speak in one word, mama, dad, by the age of 2, it's the pediatrician usually refers to a speech therapist immediately. So I'm trying to build awareness here in North India. So the earlier a child can get a diagnosis, then hopefully that should lead to treatment. The symptoms interfere with the child's language, social behavior, and emotional deficit. And sometimes autism can have a dual diagnosis of mental retardation, but then some kids do not. It just depends. तो बेसिकली क्या है कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अर्ली एज में अपीयर हो जाते हैं. जैसे 12 से 36 महीने तक, यानी कि 1 साल से 3 साल तक के बच्चे में ये सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं. और ये बता रहे हैं कि यूएस के अंदर नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि जैसे 1 साल में बच्चा कोई भी छोटा वर्ड भी बोलना नहीं शुरू करता है, जैसे मामा या डाडा ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, तो उसको इमीडिएटली वो स्पीच थेरेपिस्ट को रिकमेंड कर देते हैं. और ये जो सिम्टम्स हैं बच्चे के लैंग्वेज के साथ, सोशल बिहेवियर के साथ और इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं. और इसका मतलब कुछ भी डेफिशिएंट उसका हो सकता है. Behavioral treatment for autism is a science called applied behavior analysis. And basically, it's a science that can improve the skills of a kid with autism with communication, language, behavior, social skills, and feeding. There's 2 very important behavioral principles: positive reinforcement and negative reinforcement. ओके, ये जो बेसिकली है जो अभी हम सिम्टम्स के बाद हम ट्रीटमेंट के ऊपर आ गए. ABA इज सेड टू बी द ट्रीटमेंट. और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है कि एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जहाँ पे बिहेवियर जो है वो स्टिमुलस के साथ चलता है.
और उससे पहले भी आ सकता है कभी कभी। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसके अंदर जो है वो स्टिमुलस के साथ रिमूव किया जा सकता है और फ्यूचर में उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। Examples of positive reinforcement when an appropriate behavior is reinforced. A kid's in the classroom, the kid raises its hand, the teacher praises the child, good job raising your hand, he gets attention. So in the future that appropriate behavior of hand raising would increase. तो बेसिकली क्या है कि जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है और वो स्कूल में जाकर के कोई भी काम करता है, जैसे बच्चे ने हाथ भी उठाया है और टीचर अगर उसको प्रेज कर रहा है तो फिर वो बिहेवियर उसका सेट हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है उसका बिहेवियर और आगे के लिए वो उसका अच्छा हो जाता है, उसका साथ चलता रहता है फिर वो। Positive reinforcement, it can also be used incorrectly to where an inappropriate behavior is reinforced. A common example is when a child's in a toy store with her mom and the mom says, no, you can't have that toy. So the kid starts tantruming, screaming. So the mom says, okay, you can have the toy. So therefore the child's tantruming increases. अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को जैसे किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है, उसको कोई टॉय नहीं दिया जाता है या वो डांस करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उसकी मदर उसको रिफ्यूज करती है तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है या क्राइंग शुरू कर देता है, जिसको हम टेंट्रम्स बोलते हैं। तो ऐसा बिहेवियर फिर उसमें आ जाता है सामने। And then negative reinforcement, an example of when an appropriate behavior would be reinforced, a teacher says you need to sit down, do your work, don't talk to your friends. When you complete your work, then you can have a break. So it's the concept of negative reinforcement. The work is removed after the appropriate behavior of completing the work without any problem behavior. तो नेगेटिव बिहेवियर में क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे को काम दिया गया, टीचर ने कोई काम दिया है, उसको बोला है कि आपको 5 मिनट या 15 मिनट बैठ करके इस काम को निपटाना है, तो फिर वो आराम से उसको निपटाता है काम को। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आपको ब्रेक दिया जाएगा, तो वो भी एक मतलब उसमें नेगेटिव बिहेवियर के अंदर आ जाता है। और इससे उससे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उसका एकेडमिक डिमांड जो है वो रिमूव किया जा सकता है विदाउट ब्रेक। And an example of how negative reinforcement is inaccurately used, where basically inappropriate behavior gets reinforced. If a child is said, sit down, do your work, and the child starts screaming, complaining, rips up the work, and the adult says, okay, you don't have to do it. So the inappropriate behavior will increase in the future. तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मदर ने बोला है बच्चे को कि अभी आपका होमवर्क करने का टाइम है, लेकिन बच्चा बोलता है कि मेरे को होमवर्क नहीं करना है, और वो होमवर्क नहीं करते हुए तो मम्मा बोलती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू डोंट डू इट। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चा है वो कोई कंप्लेन करता है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट करता है, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम आती है वो फिर धीरे 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 बढ़ती रहती है। स्टूडेंट्स बिहेवियर और कंप्लेनिंग एंड आर्ग्यूमेंट, हाँ, ये इंक्रीज होता रहता है, ये फ्यूचर में भी इंक्रीज हो सकती है चीज। Okay, I'm going to try to continue to be brief. I want to show a case example. It was a 3-year-old diagnosed with an autism spectrum disorder. He had no functional language whatsoever, no words, no sign language. So he had a lot of tantrum behaviors all day long. And the main way he would communicate would be to grab an adult's hand to show the adult what he wanted. अभी एक केस स्टडी की बात कर रहे हैं। जितनी भी हमने चीजें जो भी हमने अभी तक सिम्टम्स वगैरह डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इस बच्चे के अंदर प्रेजेंट थे, तो उसका एक ये आपको केस स्टडी दिखाना चाह रहे हैं। I'm going to show you 2 baseline videos. This is prior to treatment. One's going to be in the school setting, one's going to be in the home. You're just going to see what this child's daily life was like, what his behaviors were without any language. ये जो पहले 2 वीडियोस हैं इसके अंदर ये प्रायर टू द ट्रीटमेंट वीडियोस हैं, 2 हैं, एक बच्चे के स्कूल का है, एक उसके घर का है, तो उसका कैसा बिहेवियर था, कैसा उसका टेंट्रम्स थ्रो करता था, वो आप इसमें देख पाएंगे। वेरी स्मॉल क्लिपिंग्स। So this is the child in the school setting, where he would throw himself on the floor, tantrums, probably 3 to 4 times a day. This is a baseline video in the home setting. पहले वाला जो था वो स्कूल का था वीडियो, जैसा आप पढ़ सकते हैं ऊपर, और ये दूसरा वाला जो अभी दिखा रहे हैं ये घर का है। Great, and tell me what you want. मामा उसको पूछ रही है आपको क्या चाहिए। We didn't want your water. Okay, so basically we wanted to start out
Since this child had no language, we started out teaching him signs. The two main things he liked in the school all day was toy and movie. So we used positive reinforcement where we would teach him the American Sign Language, signs for toy and movie, and then we'd prompt the behavior at first, then we'd reinforce with the item he requested for. तो इस बच्चे को जब ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज में इसको ट्रीटमेंट शुरू किया गया। वो स्कूल के अंदर उसको सिर्फ दो ही चीजें पसंद थी, एक मूवी और उसको जो टॉय था। तो उसी के ऊपर उसका जो ट्रीटमेंट था जो उसको आधारित करके उसको स्टार्ट किया गया और फिर इसके बाद इसका हम रिजल्ट देखते हैं। Negative reinforcement was also used where we provided a lot of reinforcement when he would stay in his seat, and then after he'd comply with some demands, we'd remove. In other words, I would love to say that I have not seen, I have not experienced any miracle, any mystery after that. But today, amazingly, I found myself in this mysterious environment where a normal being is able to read a lengthy quotation within few seconds. My all appreciations to Kabir. And I extend my best wishes and a bright future to him. He is amazing. Rather, I would love to be his student. And I request all the parents, though I am against this education system, which was never Indian education system, it was imposed by the Britishers. Our system of education was entirely different. But we are living in such an environment, we cannot be deprived of this, and we cannot say that we are not going to unless a major change occurs. So, unless major change occurs, Kamlesh Kabir has a bright future in this. Because we are in such a race where we cannot think of losing a second. We don't want to lose the opportunity where our child will stay behind. So Kabir, all my appreciations for you. And Perry, I was really impressed by you when I met you in my ashram. And I would congratulate you that you really have a bright future in India. But you are little late. All those critical characters are matured now, and our country is full of those people. We call them politicians, we call them Rishi Munis, we call them Mahants, and I am also a Sri Mahant. I am the head of all these critical cases. You can start with me. I to emphasize my statement, you say, if you see a person who is spinning his or her head in a repetitive manner, we will never say that he or she is a critical case. We will start worshipping him or her. We will say that it's a divinity within him or her. So now I came to know that is a critical case, but it is matured now, so you have to work hard. And you put a big full stop over his or her activity. He will show his stubbornness or her stubbornness. He may tear off his clothes on the road. He will come down to the road. He will start throwing the things around him. He may change his dress code from the saffron clothes to a women clothing. So this is the problem in our country. And it is our bad luck that we kept on worshipping those people. So you have a great future. And again, I extend my best wishes, though those will be hard cases, so you have to be a bit careful, but all my best wishes. I really love this function, well organized, though it was a bit late, but in India it is acceptable. If this is the problem of culture, this is the problem of country, that if you reach on time, you may find the hall, the auditorium empty, no organizers, and if the organizers are there and the chief guest come, it has happened with me, I had to inaugurate the badminton championship, and I was asked to reach there at 4 o'clock in the evening. I said, should it be sharp 4? This just call prior to start from your ashram. So I called up at 3:45. They said, better you come at 5. So
should I call you again? They said, no, no, no. You come over, we will welcome you. I reached Polo Ground, none of the players was there. None of the audience was there, only the organizer. They haphazardly took me behind the gymnasium. There they organized a cup of tea, party, whatever. They said, sorry, nobody has come. And till 6:30, the function was supposed to start at 4. But it started at 6:30. Then they said, sir, okay, we are going this way, taking our bouquets and garlands for you, and you please come from that way. So this is acceptable. So it was late, no problem at all. But whosoever is coming to my ashram, he is also known of, well aware of this fact. That function will be little late, and he will be coming little late. Don't worry. Really appreciate it. All my best wishes for all of you, especially Dr. Perry and Kamlesh Kabir, and we are always there for you. If anyhow we can support you, we can help you, we can organize. As I told you earlier also that I am ready to organize a group in my ashram or whatever the venue you select. But the question comes where you have to compromise with the fee structure, because I would love to tell you, sir, my ashram is based on agricultural income. I am not into charity, though I do charity, but I never expect or accept a single penny. My friend knows. So whatever I earn, I belong to a jet sick family. Whatever I earn from my fields, that I used to put in the social activities. So you have to compromise a little on the fee structure. Then I have a bunch of students with me who are studying with me, and of course they are from poor background. They belong to poor families. They cannot afford, but they are staying in my ashram. You may have seen. So if you are ready to compromise a little bit, I am ready to give you a bunch of students, and among all, I will be the eldest student or whatever you say to learn. And it is always pleasing if you have the capacity, if you have the habit of learning at any age. I never consider you that you have become old and your age matters. No way, not at all. If you have the capacity to learn, it means you are still a student. If you are ready to bow down, you are ready to be receptive, I think you are the young Indians, and I would love to welcome you all, that we ourselves and we must send our kids to these type of scholars, these type of teachers, which can create miracles. And today you cannot say that you haven't seen the miracle. You have experienced the miracles through Kabir and through Perry. All my love and blessings, and I am really grateful that you have spared me time to be your chief guest. I'm really grateful. Thank you so much. Chief guest and honored guests and the organizers, thank you very much for inviting me. I had to go to Sangrur to attend a function. I missed that. Me and my colleague Harpreet Singh were to go together. We were to leave this place at 12 o'clock. Now you can imagine how interesting, how good the things were and what was there to learn. We skipped that and we are still here. So you can imagine on that. Thank you very much, and I congratulate you. And I wish you keep organizing such functions where we can learn more. Thank you very much. सब तो पहला मैं कबीर जी का पूरी फैमिली का थैंक्स करदा कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ कुछ स्कूल चुने सी साडा स्कूल भी चुनिया ਤੇ मैं विशेष करदा कि बहुत अगे तुसीं जाओगे। पर मैं कबीर जी तो थोड़ा पुछना चाहना, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ नंबर याद किए सी, ये दो करके याद किए, 4 किए, कैसे याद किए? बस मतलब कि आपने माइंड में क्या रखा था कि मैं ये क्या सोच के याद कर गया? ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 या 2 के उसमें फॉर्म में था या 3 और 4 की फॉर्म में था। एक ऋग्वेद का एक खास मंत्र है जिसको हम ऋचा कहते हैं। वहाँ पे हम इनके फोनेटिक जो सिंबल्स होते हैं उनकी वेव साउंड्स को बना के और उनकी वेव्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेव्स के अकॉर्डिंग ट्रैवल करती है। तो ये मैटर नहीं करता कि 1 या 2 की फॉर्म में था, बट ये वेव्स की फॉर्म में था। जैसे हम म्यूज़िक सीखते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लिरिक्स होते हैं
लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे कुछ जो लेटर्स होते हैं, तो ठीक ऐसे ही हमारा ब्रेन भी वेव्स की फॉर्म में वर्क करता है। तो ये एक वेव्स के अकॉर्डिंग था एज ए सेंटेंस। अगर हमने भी याद करना तो वो हाँ हाँ, आपको उसको जो वैदिक एरा में जो लोग यूज करते थे वो उस लाइक उस टेक्निक्स को सीख के आपको वेव्स बनाना आना चाहिए उनको। क्योंकि जब हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो एक या दो बार में सुनते ही हम उसे ये आदत हो जाती है कि हम उसको रिकॉल करते रहते हैं बार बार। तो ये भी बस वही फॉर्म है। थैंक यू, थैंक यू। हरप्रीत जी, बेसिकली ये एक फुल फ्लेज साइंस है, फ्लूक नहीं है, 100% हिट करने वाला है। तो अभी हम हरप्रीत जी का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, और उन्होंने भी इस फंक्शन में हमें काफ़ी सपोर्ट किया और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेस रमनजीत कौर, जो करहाली साहब से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उन्होंने पूरा टाइम दिया है, बिल्कुल फंक्शन जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में आ गए थे एंड अभी तक भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनको भी हम ऑनर करना चाहेंगे। तो फ्यू वर्ड्स मैम। सत श्री अकाल। I just congratulate Kabir for this, organizing this seminar, and I am very happy the girls who were standing here to give the presentation, they belong to my college. And secondly, my son is also studying here. So I appreciate Kabir's work, and I always wish he should go top. He is doing very well for the society, and we should send our children to him, because they are going to learn so much and they are going to cultivate so good habits in them. So I congratulate once again Kabir. Good morning everyone. Well, I welcome Dr. Perry here. It was my privilege to host her for the last 1.5 months. But one thing I would like to tell about her is she's most American लड़कियां वर्गी नहीं है। ये ज़्यादा अपने देसी माहौल च रह के बहुत खुश हुई। ये 1.5 महीना इन्हां नाल असीं जिहड़ा इत्थे रहे हैं, ये अपने घरेलू मैंबर वांग ही रही है, तो सानूं महसूस नहीं होया भी साडी बच्ची और इन्हां दा कोई फर्क नहीं सी। ते वड्डी गल जिहड़ी सी, ये बड़े चाਅ नाल इन्हां ने पिछले 2 महीने तो फ्री सर्विस की है। ये टोटली फ्री वॉलंटरी सर्विस थी जिहड़ी इन्हां ने इत्थे अपना इन्हां दा बहुत ही वधिया न्यू ऑरलीन्स क्लिनिक चल रहा है, उत्थे इन्हां ने अपना स्टाफ रखा हुआ है, 5-6 होर छोटे डॉक्टर काम कर रहे हैं नाल, उत्थे बच्चों की देख रहे हैं। अपना प्रोफैशनल काम छड्ड के जिहदे विच इन्हां नूं काफ़ी she must have lost a lot of wealth, but ये इन्नी खुश है इत्थे, कहती आई हैव मेड मोर वेल्थ बाय ट्रीटिंग बहुत सिक जिहड़े बच्चे सी, बीमार बच्चे सी, उन्हां नूं ट्रीट करके, ते जदों उन्हां दी मावां दी अखां 'च इंजू आए, ते देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ दोज मदर्स। शी सेड आई फेल्ट दैट आई डिडंट लूज एनीथिंग, आई ओनली गेन थ्रू दिस वॉलंटियर। तो एक बार फिर मैं कहना कि जोरदार ताड़ियां नाल इन्हां आपां उन्होंने एक वादा होर किया है। अनदर प्रॉमिस शी हैज मेड इज भी नवंबर फिर आके 1-1.5 महीना इत्थे इसे तरह के बच्चों जिहड़े आके इत्थे जिन्नी मदद कर सकती हुई 2 महीने लिए फिर आके साडे कोल आउणगे। ते इन्हां दा मोटिव है भी इत्थे आपां इंडिया जिहड़े इहो जिहे बच्चे हैं उन्हां दी ट्रेनिंग लई अजकल ईवन PGI ते रजिंद्रा हॉस्पिटल भी उन्होंने डायगनोज कर देते हैं भी ये बच्चों च नुक्स है, पर उन्होंने सोल्यूशन कोई नहीं है, ना इलाज दे रहे हैं ना ट्रीट कर रहे हैं। तो भी मैं इत्थे एक काडर तैयार करा जिहड़े डॉक्टर मेहनती बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने ट्रेनिंग देवां भी वो इहो जिहे बच्चों को इत्थे हिंदुस्तान सर्विस दे सकन ते एक कंटीन्यूअसली बच्चों का इलाज होंदा रहे। इसलिए ये दोबारा आ रहे तो मेरे का बहुत ही छोटी कंट्रीब्यूशन है जे कि मैं ये मेरे को रहे तो असी इन्हों अपने घर के फैमिली मैंबर वांग रखा
ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। she had a very good time here and she enjoyed all this including work. That's all, and once again I thank her for थैंक यू डॉक्टर कूनर, थैंक यू। इतने सारे एस्पेक्ट से हमें आपने डॉक्टर पेरी के वाकिफ कराया। लेकिन महाभारत में कृष्ण का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो अर्जुन का सारथी था। अगर डॉक्टर पेरी को आपके जैसा सारथी नहीं मिला हो तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वी आर थैंकफुल टू यू एंड ऑफ कोर्स टू डॉक्टर पेरी फॉर द वर्क शी इज डूइंग इन इंडिया। Thank you very much. We would again like to welcome you in India in November. She has a flight tomorrow. She's flying back tomorrow to USA and she'll be back with her team in India in November. So by that time, I think अगर किसी के पास भी कोई ऐसे पेशेंट्स के बारे में हमें पता चलता है तो हम उनको बता सकते हैं कि ऐसे करके नवंबर में उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। By the time you come back, there will be a list of some patients which we will collect by that time so that we can work with you on those kids. It will be very nice. Congratulate Kabir, the brain behind this today's function. और मैं साथ ही साथ he also lives in my house. मेरे घर से रहने हैं ते पर आज तक मुझे भी नहीं पता भी how talented he is. तो गंगा मैं कबीर जी से काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ। जब से पटियाला में आए हैं तब से मेरा इनसे इंटरेक्शन है और हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं कि हाउ वी कैन गो हाइट। जो आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट एज ग्रुप में स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स पर्सनस की, एनआईएस में इन्होंने कई प्रोग्राम्स हमने करवाए हैं इनके स्पोर्ट जो लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे एनआईएस में, उनके भी इन्होंने काफ़ी काउंसलिंग और मेमोरी और मोटिवेशन के कई प्रोग्राम किए हैं। तो मैं जो आज का प्रोग्राम था बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, कबीर जी को, मैम हैरी को, मैम पुरी जी को, सभी को मैं बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आने वाले समय भी और अच्छे प्रोग्राम्स होंगे। आगे हम डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट सेगमेंट्स में सोसाइटी के ये प्रोग्राम्स हम चाहेंगे ना इसमें भी कुछ हम और भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएँ जो हमारे आर्टिस्ट स्पोर्ट्समैन हैं उनके मोटिवेशनल और उनकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार अपने शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।